Okay. So, which softwares we have installed, guys? Can you name those softwares? Who software we install kale? SQL Server, sir. Okay. SQL Server रो कौन data component install kale? SML, Developer Edition and Express Edition. So, ଗୋଟେ component है developer edition or express edition, and the second component is SQL Server Management Studio, right? Correct. Okay, we have installed these two components. Okay, the first one is SQL Server Developer Edition. The second one is SQL Server Management Studio. Now, Developer Edition is a piece of software which is actually called a database engine. याको कुहाଯାଏ database engine. So database engine माने एटा कहते database server. तो माने this is the storage place where all your databases will be created. Okay, ये जो database हमें discuss करते हैं, all your databases will be created. Okay, within this. This is a storage place or this is a server you can say, or it is called also a database engine. जो actually तमरो data store होगा. So what about SSMS? SSMS is the software where you will start writing SQL commands. जो हमें SQL commands लिखी कि we can create database, we can create tables, we can insert data. So SSMS software होची आम ପାଇଁ front end, एटा हेगला आम ପାଇଁ kind of back end. So SSMS तमे तो real time रे काम करिवो तो organize गोटे प्रोजेक्ट रे काम करछो प्रोजेक्ट रे एटा हला तमरो एटा हला database server. तुमको जो लैपटॉप दिया है से लैपटॉप रे खाली रहिबो SSMS. तुम लैपटॉप रे खाली SSMS रहला. SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ए सॉफ्टवेयर रहिबो जोथरे तुम एक्चुअली SQL कमांड लिखिबो. Okay. So let's say a project, like there are 6 project members who are working. So they will have only SSMS installed. Gote server re is database ra SQL server database developer edition किंबा express edition install हेगला server टा install हेगला एगुडा सब रे SSMS install हो सेटा open कला पर तमे एटी command लिखले data टा actually एटी आसी store हो tabular format. So you would have noticed कि बैंक रे जो सिस्टम ओके बैंक रे जो सब सिस्टम जो बैंकर माने यूज करंती ओके से सिस्टम रे एक्चुअली डेटा स्टोर हुए से खाली सॉफ्टवेयर टा ओपन हुए जो तुम्हारा अकाउंट क्रिएट होला द मोमेंट दे विल क्लिक ऑन सबमिट डेटा जाय कि सर्वर रे अलगा सिस्टम रे अलगा सीपीयू बा स्टोरेज प्लेस रे स्टोर हो से सिस्टम होची आकु कहते थिन क्लाइंट. थिन क्लाइंट माने एतिरे खाली फ्रंट एंड टा देखा जिवो. ओके फ्रंट एंड रे जहां सबमिट करिवे कैश विथड्रॉ करिवे सो डेटाबेस रो आसीबो इन्फॉर्मेशन कैश डिपॉजिट हो एटु गला इन्फॉर्मेशन तो ताको जो लोकल सिस्टम रे किछि स्टोर हुएनी ताको कोनते क्लाइंट थिन क्लाइंट बा क्लाइंट सॉफ्टवेयर कोनते सर्वर सॉफ्टवेयर होचे कोन जोटे एक्चुअली तमरो डेटा स्टोर हुए. ओके सो ये सेमती एटा हला क्लाइंट इंटरफेस. ओके एटा होची सर्वर. सो सेति पे हम जो दीटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करले द फर्स्ट वन इज अ डेवलपर एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस इंजन और सर्वर. दिस इज SSMS इज अ क्लाइंट टूल आको कोनते क्लाइंट टूल जोटे में कमांड्स लिखिया तमे फेसबुक रो जो ऐप यूज करछो दैट्स अ क्लाइंट टूल. योर डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड समवेयर डेटा जाके फेसबुक रो मे बी बैंगलोर सर्वर रे स्टोर होतिबो नले यूएस रो न्यूयॉर्क हेतिबो नले टेक्सास रे स्टोर होतिबो बट तमे जोटी यूज करछो तम सिस्टम रे तम ऐप रे किछि डेटा स्टोर होने इट इज गेटिंग एक्चुअली स्टोर्ड इन द फेसबुक सर्वर. ओके तमे गूगल रे इंफॉर्मेशन फेच करछो तम सिस्टम रे किछि इंफॉर्मेशन नै एक्चुअली इंफॉर्मेशन फेच हे कि आसुची गोटे अलगा सिस्टम रो बा अलगा स्टोरेज प्लेस रो. सो क्लियर एवरीवन और यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? Sir, clear, sir. ओके सो नाउ सो SSMS होची आम एठी कोन होची आम लैपटॉप टा सर्वर भलिया भी काम करची क्लाइंट भलिया भी काम करची बिकॉज़ आम लैपटॉप रे फर्स्ट हम इंस्टॉल करले डेटाबेस डेवलपर एडिशन सर्वर फर्स्ट इंस्टॉल करे सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे तापर क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे. सो रियल टाइम रे तमे काम करला को यू विल योर लैपटॉप विल नॉट हैव दिस विल बी स्टोर्ड इन अ डिफरेंट लोकेशन. तमे को कनेक्ट करिवो थ्रू
तमरो SSMS थ्रू रे कनेक्ट करिवे तमे यार गोटे एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क विल हैव यूनिक आईपी एड्रेस जो सिस्टम तमे हम जते जण कनेक्ट हेचे आइदर यू आर यूजिंग ए स्मार्टफोन और यू आर यूजिंग ए लैपटॉप एवरी डिवाइस विल हैव ए यूनिक आईपी एड्रेस तम घर जेमति गोटे यूनिक एड्रेस रहिछि ओके सेमति सिस्टम रो गोटे यूनिक एड्रेस डेफिनेटली अछि ओके सेमति ये गोटे सिस्टम बा एटा गोटे सर्वर आर गोटे आईपी एड्रेस अछि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कोनती आईपी एड्रेस ओके सो आईपी एड्रेस माने ए सिस्टम जो माने नेटवर्क रे थांती इंटरनेट आइदर लोकल नेटवर्क रे थिबे नहले इंटरनेट रे कनेक्ट हेतिबे दे विल हैव एन यूनिक आईपी एड्रेस आमे से एड्रेस को कनेक्ट करिया मु ए एड्रेस को मते यूजर नेम पासवर्ड मिलबो सो समस्त जो माने प्रोजेक्ट रे काम करिवे सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करी गोटे डिफरेंट रोल अछि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जे पर्सन से दे ही विल बी क्रिएटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर यू ऑल ओके सो तुम प्रोजेक्ट रे काम करियो तुम यूजर नेम पासवर्ड एसक्यूएल सर्वर तुम अकाउंट ओपन कराबो यूजर नेम पासवर्ड दिया जिवो सो दैट यूजर नेम पासवर्ड ए सर्वर ए सिस्टम रो एड्रेस तुमको देले आईपी एड्रेस देले तुम कनेक्ट हे जिवो ओके Okay, sir. ओके क्लियर एवरीवन ना कार किछ एनी कंफ्यूजन एनी डाउट सर ये जो आईपी एड्रेस टा जेटा कि आमे एतले जॉब माने एतले कोनोसी माने वर्क करला बेले ही सेटा तो हमर क्रिएट हबो एबे तो किछि क्रिएट होबार नै जते माने आमे जो एबे पढुचे ना हम पई दरकार नै किछि ओके हम पई दरकार नै किंतु आमे जेहेतु इंटरनेट रे कनेक्ट हेचे समस्त का सिस्टम रे गोटे आईपी एड्रेस अछि अच्छा ओके हां सेटा तो समस्त सिस्टम रे गोटे आईपी एड्रेस अछि एबे भी एक्टिवली थिबो सो तमे जाय कि जदि आईपी कॉन्फिग करी गोटे कमांड अछि आईपी कॉन्फिग करिवो सो डेफिनेटली तमे पाई जाय परिवो देखो मु तुमको पे देखौ छै सर हां आदित्य को सर ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଟାଇମ ଆମେ ୱାର୍କ କରୁ ମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି SSMS ରେ କାମ କରୁ नहीं आदित्य तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होची सुबह नहीं क्लियर कटि जाउची मझिरे मझिरे तो टिके टाइप कर दियो आई आंसर सो तुम एटी लिखलो COMMAND ओके सो कमांड लिखलो ओके एटी जदि तुम आईपी कॉन्फिग लिखलो आईपी कॉन्फिग लिखिकी एंटर प्रेस कला माने तुमको आईपी एड्रेस देखेबो ओके सो आईपी एड्रेस CMD एटा देखो एटी आईपी कॉन्फिग करू गोटे IPv4 एड्रेस आसी देख परछो दिस इज द आईपी एड्रेस ओके एठी भी तुमको देखेबो तुमरो स्क्रॉल डाउन IPv4 एड्रेस एमती आईपी एड्रेस एमती थाए एमती तीनटा डॉट थिबो एमती गोटे रैंडम एड्रेस थिबो सिस्टम रे मोबाइल कथा आई एम नॉट श्योर ओके ये एटी अछि तमे बेसिकली एटी तमे जाई सिंपल कमांड ओके आईपी कॉन्फिग मार के एंटर कर दो यू विल गेट आईपी एड्रेस ओके सो यस दैट इज ओके कमांड लिख लो कमांड लिखी के एटी गलो आईपी कॉन्फिग टाइप कर दलो दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस okay so now we will see how to launch SQL server मोबे SQL server को केमती लॉन्च करबी देखो so start को गली हेलो सर okay हाँ हाँ को हेलो सर ହେଲା କି ନେଟୱାର୍କ ହେଲା କି को ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଟାଇମରେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ୱାର୍କ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ SSMS ରେ ମାନେ କାମ କରିବୁ ନା कौन कहला
ମାନେ ମୁଁ ହଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଆମେ ଯୋଉ ରିଏଲ ଟାଇମ ରେ କାମ ଯାହାବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ରେ ଆମେ କଣ ଏସଏସଏମଏସ ରେ ମାନେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାକୁ କରିବୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ଏସଏସଏମଏସ ରେ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତମେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲ ଡେଭଲପର ଏଡିସନ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲ ଏସଏସଏମଏସ। ଡେଭଲପର ଏଡିସନ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ଲେସ ଭଳିଆ ସର୍ଭର ଟା, ଆଉ ଏସଏସଏମଏସ ଟା ହଉଛି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ। ତମକୁ ଦେଖ କାମ ତମେ ଶିଖିଲ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର, ବଟ୍ ତମର ଫୋକସ ରହିବ ଟୁ ଲର୍ନ ଦିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏସକ୍ୟୁଏଲ। ବଟ୍ ତମକୁ ଦେयर ଇଜ नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି यू मे गेट ସଫ୍ଟୱେयर ହିସାବରେ ଏମଏସ୍ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ମିଳିପାରେ। ଓକେ, तुमको माई एसक्यूएल मिल पारे, तुमको ओराकल मिल पारे, तुमको लेट्स से मारिया डीबी मिल पारे। ओके, आजियोर एसक्यूएल मिल पारे। ओके, डिपेंड करे। सो तुम सबुथिरे काम करि परिबो बिकॉज़ यू नो दिस लैंग्वेज। सिंपल, क्लियर। आमे लैंग्वेज Yes, sir. समस्त ए जेते मार्केट रे डीबीएमएस अछंती समस्तंकर होची गोटे लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज, सेटा होची एसक्यूएल। ओके, सो एसक्यूएल ତାର टाको ସେଇ केमती। हां, hello, हेलो। ତ ସେଇ କ୍ୱେରିରେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସବୁ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ କରିପାରିବା हाँ हाँ, सब कर କାମ। पारो ऑलमोस्ट। देखो 95% मैच हबो, ठीक अछि। ओके ओके सर 95% मैच करिवो। ओके, बट आउ 5% यू विल हैव टू माने टिके माइनर चेंजेस गुडा के यू विल हैव टू टेक केयर। तुम देखिए पड़ियो ना, ओके तुम सर गूगल कर दबो, ठीक अछि। ଆଜ୍ଞା Okay, I'll show you how to launch. Okay, so तुम टाइप करो। So I'm getting this. Okay, तापर एठी लिखिबो SQL लिखु लिखु you will get SQL Server Management Studio। एटा होची सॉफ्टवेयर। एठी जदी साइड रे सेटअप लिखा हिथिबो, ENG लिखा हिथिबो, एगुडा सब देखिले खोलिबनी, ओपन करिबनी। से एगुडा सब इंस्टॉलर सब। ओके, एगुडा सब इंस्टॉलेशन ପାଇଁ କି ଅଛି, इंस्टॉलेशन सेंटर इंस्टॉलेशन ପାଇଁ କି। बट एटा होची एक्चुअल सॉफ्टवेयर। मते देखौची 18, तमे आई थिंक इंस्टॉल करछो 20, राइट? 20 20.2 करेक्ट? यस और Sir, नो? 20.2 sir. Yes, yes, 20. 20. 20 that's okay। तुमको तमेटा एसक्यूएल लिखला को एठी आसी जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो 18। तुमको आसीबो 20, एठी क्लिक कलो। ठीक है, टाइम नबो। ओके ओके, सो बाय डिफॉल्ट एटा रे डेटाबेस इंजिन। ओके, सर्वर नेम जहाँ अच्छी सेटा रखिया को दियो, किछि चेंज करनी। ऑथेंटिकेशन विंडोज ऑथेंटिकेशन रहइबो, एटी किछि चेंज होबनी। ओके, यू विल हैव टू कनेक्ट। ए जो सर्वर कहली, एई जगह रे तुम जदी एसएसएमएस तमर लेट्स से रियल टाइम रे काम करछो, एई जगह रे तुमको आईपी एड्रेस, तुमको सर्वर आईपी एड्रेस मिलिबो। आ तुमको ना एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मिलिबो, तुमको यूजर और पासवर्ड मिलिबो। कारण समस्ते गोटे कॉमन लॉगिन रे काम करि परिबेनी, समस्तଙ୍କର गोटे लॉगिन गोटे पासवर्ड हबनी। इंडिविजुअल को ताकर निजर यूजर नेम और पासवर्ड मिलिबो। तापरे ए सर्वर नाटा भी सर्वर डिटेल्स आइदर ना मिल पारे, नहले तुमको से जो एड्रेस टा देखेली 123.123.25.53.2 ए टाइप रो एड्रेस मिलिबो, सर्वर एड्रेस मिलिबो, आईपी एड्रेस मिलिबो। ओके, नहले नेम मिलिबो। देन यू विल गेट योर ओन यूजर नेम पासवर्ड। हमको एटी किछि दरकार ना, वी विल सिंपली गो विथ विंडोज ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन जाकि कनेक्ट करिया। तमे 20 यूज करछो, सो तमर एमती गोटे किछि थिबो एनक्रिप्शन को फॉल्स कले कनेक्ट हे जाउथिबो, राइट? तमर आ गोटे तळे एमती ऑप्शन आउथिबो, राइट? यस और नो? मैंडेटरी और ऑप्शनल एमती टाइप हाँ आछिन खाली। हाँ, ऑप्शनल को जन जनकर मैंडेटरी कनेक्ट हुए, जन जनकर ऑप्शनल रे कनेक्ट हो। एनक्रिप्शन टा ऑप्शनल कर दबो, कनेक्ट कर दबो, यू विल बी कनेक्टेड टू एसक्यूएल सर्वर। एबे हमें एसक्यूएल सर्वर रे कनेक्ट हे गले। ओके, कनेक्ट होला पर ए साइड रो अछि न्यू क्वेरी। ओके, ए जगह रे हमको एसक्यूएल कमांड लिखियो पड़िबो। न्यू क्वेरी क्लिक करो। ओके, क्लिक कला पर यू विल गेट दिस स्क्रीन। एटा होची क्वेरी विंडो, जोठी हमें कमांड्स लिखि परिया। क्वेरी कहउछ बिकॉज़ इट्स कमांड, एसक्यूएल कमांड को क्वेरी को जाय। ओके, बिकॉज़ वी आर टाइपिंग समथिंग,
and आर रिजल्ट हमको मिलिबो ओके वी आर seeing it as a SQL query or SQL command. So can you all try जो माने लैपटॉप रो कनेक्ट हेचो समस्त कनेक्ट करि परछो Yes, sir. okay perfect. Now okay the first command see first होचे you will see multiple databases but by default ए चारिटा database create हेथिबो master MSDB okay you can see एटी जो तुम क्लिक करिवो master MSDB tempdb ଆଉ କଣ ଅଛି Model. ओके मॉडल सो मास्टर एमएसडीबी टेम्पडीबी मॉडल एटा होची सिस्टम रो ओन डेटाबेस हमरो आ संगे किछि लेना देना नै लेट it will be created as part of your installation संगे रे एगुडा क्रिएट हे जते तमे जेमते मोबाइल रे तो फर्स्ट टाइम मोबाइल आनु छो बहुत सारा ऐप रहउछ ऑलरेडी राइट जेमते तमरो प्ले स्टोर हे गेला जेमते सेटिंग्स हे गेला जेमते कॉन्टैक्ट्स हे गेला यूट्यूब हे गेला देयर आर लाइक 20-30 एप्स बाय डिफॉल्ट सिस्टम रे मोबाइल रे रहउछ बट हमकु जति एडिशनल किछि ऐप दरकार देन वी आर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द प्ले स्टोर ये सेमती सिस्टम रो चारटा डेटाबेस okay ये सिस्टम रो चारटा डेटाबेस which is actually created by default when you install करू करू ये चारटा क्रिएट हे जिवो हम आ विषय टेक्निकलिटी हमकु जानिया दरकार नै बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जे थिबो ताहारो बेसिकली या संगर से डील करबो हमर किछि काम नै हमें आइदर डेटाबेस क्रिएट करि पारिया निजरो क्रिएट करी काम करिया सो निजरो गोटे डेटाबेस क्रिएट करिया कोले जो डेटाबेस मु तुमके परंत टिल नाउ मु एक्सप्लेन करथिले वो डेटाबेस हो जो स्टोरेज प्लेस ओके ता भीतर हम एक्चुअली टेबल रखु जे क्लियर we have discussed multiple times yes or no सर Yes, सर्वर नेम रे कोन रखिबे माने सर्वर नेम रे किछि आसुनी ब्लैंक आसुची हां ब्लैंक आछी एंटर और सिलेक्ट सर्वर नेम आछी ओके कैन यू शेयर योर स्क्रीन शेयर करो फटाफट देख दवा गोटे मिनिट सर मो लैपटॉप रे कनेक्ट सर मोर जो सर्वर नेम रे गोटे आस्तला कि लैपटॉप समथिंग दे हाँ कि हाँ गोटे हाँ आस्तुला दैट इज सेटा ओके सेमती ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नै कनेक्ट होची तो जहां सर्वर नेम रे पॉपुलेट अछि कनेक्ट होची तो सक्सेसफुली नो सर ओके शेयर करो स्क्रीन सर टिके टाइम आपण क्लास कंटिन्यू करंतु मोर ओके ओके कनेक्ट होई हाँ तो मु देखे दउची सर्वर नेम रे नहले गोटे काम करिवो जदी एम्प्टी आसुथिबो ओके जदी एम्प्टी आसुची ताले गोटे काम करो स्क्रीन विजिबल अछि यस सर ओके सो एठी जदी एम्प्टी आसुची तो व्हाट यू कैन डू इज एठी सर्वर रे क्लिक करो ब्राउज फॉर मोर करो तापर डेटाबेस इंजिन आसबो ता भितरे सर्वर टास देखो डेटाबेस इंजिन भितरे टैलेंट अछि मु कनेक्ट कर दूं चलो ओके सर मैं ट्राई करची ओके तुम कनेक्ट करो सो नाउ हाउ टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस हमें डेटाबेस निजर केमती क्रिएट करिया सपोज आई वांट टू क्रिएट डेटाबेस create database bank ओके मोटे डेटाबेस क्रिएट करिया चाहूची बैंक सो केमती हला क्रिएट कमांड होची क्रिएट डेटाबेस बैंक आको केमती हम रन करिया पूरा कंप्लीट लाइन टाको सिलेक्ट करिया माउस रे कि कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करि परिबो नले माउस रे सिलेक्ट करि परिबो ओके माउस रे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट माने ए कमांड टाको रन करिया ओके एग्जीक्यूट मींस टू रन दिस कमांड मुझे थोड़ा एग्जीक्यूट रे क्लिक करबी सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली ओके कंप्लीशन टाइम होची है ओके ता माने बैंक करी गोटे डेटाबेस दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड सो मु एठी जिबे एपुर जाय के डेटाबेस रे गले ओके सी कैन यू ऑल सी बैंक इज क्रिएटेड ये बहुत सारा डेटाबेस क्रिएट हिज ओके अलग अलग बैच बैंक अलग अलग रिक्वायरमेंट बैंक देयर आर मेनी databases which are created but now the one which I have created is bank create database bank so clear यस सर okay यस so सर simple command you would write create space de ki database run
तमे बैंक दियो स्कूल दियो कस्टमर दियो जहाँ तमे डेटाबेस क्रिएट करिया चाहछो दिस नेम कैन बी गिवन बाय यू ए दिटा टू क्रिएट अ डेटाबेस दिस टू कमांड्स आर कंपलसरी बट साइड रे नाटा तमरो तमे एनी नेम यू वांट टू गिव यू शुड गिव दैट नेम ओके सो एग्जीक्यूट सर एग्जीक्यूट रे हमें यदि क्लिक न करिके सपोज यदि जने रन माने एंटर रे क्लिक कला तो सेठी कोन एंटर हबो किछि हबनी एंटर किछि हबनी आइदर तमे एग्जीक्यूट रे क्लिक करिवो नहले आर शॉर्टकट की होची कीबोर्ड रे F5 आर शॉर्टकट की होची F5 कीबोर्ड जो फंक्शन की F1 रु F12 पर्यंत अछि यू कैन प्रेस F5 मु आउ थरे एग्जीक्यूट कला बळकु जदि आउ थरे F5 प्रेस करिबी सी डेटाबेस बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट थरे क्रिएट करि सारछ चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम तमे ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट हो सारछ यू कैन चूज अ डिफरेंट नेम ओके सर मु से आपण जेमति कहले सेमति मु लिखिछि क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस स्टूडेंट्स तो एठी मोर देखैला कि इनकरेक्ट सिंटैक्स ओके सेटा कॉपी करके चार्ट रे पेस्ट करि परिबो कोन कमांड लिखिछ सर जो मु हमर मोबाइल ले कनेक्ट हिची बाकी लैपटॉप यूज करूछि हां टिके स्क्रीनशॉट नेकी पठेइ परिबो मोबाइल रो से स्नैप टा अच्छा नेकी लैपटॉप शेयर करि परिबो फटाफट हाँ हाँ करूछि क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस बैंक ओके नहीं मु स्टूडेंट्स लिखिछि तो ताको काटी की बैक करूछि नहले नहीं स्टूडेंट्स चलिबो किछि प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स लिखले भी किछि प्रॉब्लम ओके ट्राई करो स्क्रीनशॉट शेयर करो वी विल सी ओके so everyone understood create database bank you have created okay but मते बैंक एठी देखो एठी मु मास्टर सिस्टम रो डेटाबेस भीतर अछि जदी मु बैंक डेटाबेस भीतर को जिबा को चाहूची देन आई विल हैव टू यूज अ कमांड कॉल्ड यूज बैंक देखो यूज बैंक लिखले सिलेक्ट कली एग्जीक्यूट देखो एठी मास्टर अछि कैन यू सी द चेंज मु निजो डेटाबेस भीतर को मु पळे आसली okay boom put a database create koli bank I have come inside my own database that is use bank command लिखिके सर आउ थरे टिके मु सुनी create database bank रे database create होबो but एठी जो database ता selection हेछि okay by default कोन selection थिला master थिला right ता माने मु master रे अछि मु जदि मो निजो डेटाबेस डाटा क्रिएट कली ता भीतर को आसिया को चाहूची तो यूज लिखले से यूज बैंक लिखे सिलेक्ट कले आई विल बी इनसाइड बैंक ओके मु जदि लिखबी यूज मास्टर देखो यूज मास्टर लिखले सिलेक्ट कली एडी देखो कोन चेंज होची एग्जीक्यूट मास्टर राइट पुणी यूज बैंक रे सिलेक्ट करी एग्जीक्यूट कले बैंक मास्टर बैंक okay all clear or any questions you have यस सर okay so sir if you don't mind टिके again repeat करबे की please okay को कमांड टा डाउट अछि माने use bank to use master ए दीटा यूज बैंक कले बैंक डेटाबेस यूज एटी पळे आसीबो सिलेक्शन ए सिलेक्शन माने तमे ए डेटाबेस भितर अछ यूज मास्टर माने तमे मास्टर भितर अछ यूज बैंक माने बैंक भितर अछ ओके यूज बैंक सिलेक्ट करी एग्जीक्यूट कले बैंक आसीबो यूज मास्टर करे सिलेक्शन एग्जीक्यूट आसीबो मु जदि लिखिबि लेट्स से यूज ओके एबे कोन हबो को बुझि परलो हाँ सर से कहूची आइदर ये डेटाबेस नाही नहले तमे नाटा ठीक रे लिखनो मेक श्योर द नेम दैट द नेम यू हैव एंटर्ड यू हैव टू एंटर करेक्टली आइदर मो ए डेटाबेस अवेलेबल नाही नहले तमे भूल ना लिखुछ ओके सो यूज कलर को आसुनी बिकॉज़ आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस वन यस सर मोर जेटा आसीला सेटा बाकी मु क्रिएट रो जो स्पेलिंग लास्ट को ई लगेई नथिली तो सेते पे तर इनकरेक्ट आसीला ओके एबे आस कि देखो स्पेलिंग हमको करेक्ट लिखिया पड़ियो स्पेलिंग मोते एडी लिखि देबी किछ भी लिखि देबी देन इट विल नॉट रन इनकरेक्ट सिंटैक्स राइट सो क्रिएट हमको करेक्टली लिखिया पड़ियो क्रिएट डेटाबेस ने
अब if you write it in small letter, capital letter, it doesn't matter. It is not case sensitive. Capital letter, small letter, lowercase, uppercase, it doesn't matter. Okay, you can write it in any case. Okay, any letter. So everyone understood? Database Uh, केमती create करा हुए, use केमती करा जाए. सर से एपट साइड राइट साइड आपण जोटी लेखुचंदी मोर एठी ऑप्शन ही आसुनी कोठी एट लेखिबी देखो new query. हां न्यू क्वेरी हां सर हैला थैंक यू Okay. Understood? Create database command is, see, this is just a short, it has a short description, okay? ମୁଁ double hyphen ଦେଇକି ଦଉଛି ମାନେ it is not a command. এটা ହଉଛି ତମ command ପାଇଁ କି ଗୋଟେ documentation ମୁଁ create କଲି ବା ଗୋଟେ description ଦେଲି create database command ର କାମ କଣ, okay? Use database command ର କାମ କଣ, double hyphen ଦେଇକି ଯାହା ବି ଲେଖିଦିଅ ଆକୁ କୁହନ୍ତି comment. ଯେମିତି ଆମେ math ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉପରେ ଗୋଟେ point ଲେଖିଦିଏ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ସେ ଲାଇନ୍ ଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଅତଏବ ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ, ରାଇଟ୍? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସାଇଡ୍ ରେ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖେ, this is about you are describing about the command which you have written, okay? ଆକୁ କୁହନ୍ତି comment. Okay, ମୁଁ आ ପାଇଁ ଗୋଟେ comment ଲେଖିଲି କି create database command ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି, but it is not mandatory. ଆକୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚାଲିବ, but it is just for documentation. ତମେ କଣ ଲେଖିଛ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଏ ଆସି ଜଏନ୍ କଲା, ତ ସିଏ ଏଇଟା ଦେଖି ବୁଝିବ କି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛ, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛ, ଓକେ? କ୍ରିଏଟ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ବହୁତ ବେସିକ୍, ଆ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏନି, ବଟ୍ ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲେଖିଲ, କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲଜିକ୍ ଲେଖିଲ, କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ 3-4 ଲାଇନ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଡ୍ ଲେଖିଲ, ସୋ ସେଟା ତମ ଲଜିକ୍ ତମ ବ୍ରେନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ତମେ ଲେଖିଲ, ତମେ ସେଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିବ ସେଠି ଜାଗାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ତମକୁ, ହି ଅର୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୱିକଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ କରିଥିବ, ଓକେ, ସୋ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ। ତମେ କଣ କରିଛ, ତମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିନ, ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲ, ସେମାନେ ଯଦି ତମ କାମଟାକୁ ଆସି ପିକ୍ କରିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍। କାରଣ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ସ ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ 10ଟା ୱେରେ ସଲ୍ଭ କରାହବ, ରାଇଟ୍? ମୋ ବ୍ରେନ୍ 3ଟା ଲଜିକକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ 7ଟା ଲଜିକକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସୋ ତମେ ଅଲଗା 3ଟା ଲଜିକ ୟୁଜ କରିକି ଡେଭଲପ କରିଛ, ତ ମୁଁ ତମ ବ୍ରେନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କି ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଲା। ତମେ ବେଟର ତମେ ତ ଲେଖି ସଲ୍ୟୁସନ ଡିଜାଇନ କଲ, ତମେ ସେଠି ଲେଖିଦବ ଯେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଏୟା ହବ, ସେଇ ଲାଇନରେ ସେୟା ହବ, ସେଇଠି ମୁଁ ଏୟା କରୁଛି, ଓକେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଏୟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି, ତମେ ପ୍ରପରଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି, ଓକେ, ଫର୍ another person who comes in. So clear? Yes, sir. Okay. Okay, use bank only. Now I am in bank. Okay. Next one is okay. Okay, if you want to remove the database permanently, there is a command called drop. Okay, drop database. Database ro na hochi, let's say bank. Okay, drop database. Database ro name hochi bank. Can you explain me this error message? ତେବେ ୟୁଜ ହଉଛି ନା ତ ମାଷ୍ଟର ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ। Exactly. ତମେ ନିଜେ database ଟାକୁ use କରୁଛ, ତମେ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛ currently.
तो से कौच कैनॉट ड्रॉप डेटाबेस बैंक बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज बेले बेले आम गोटे फाइल ओपन करते एक्सेल फाइल कि गोटे वर्ड फाइल ओपन करते काम करते जदि जन जाकि सी ड्राइवर कि डी ड्राइवर से फाइल को डिलीट कर देन it may throw some error saying that you are already working on it, this file is already open, तमे प्रोसेस रो अछि ओपन हे कि अछि, you cannot delete it. सेमती बैंक डेटाबेस टा ऑलरेडी यूज होचे बे currently. I mean this database is selected ऊपर तुम देखियो बैंक डेटाबेस सिलेक्ट है तो सेट पे कि allow करने cannot drop database bank because it is currently in use. ओके जदि मु चेंज कर देली मास्टर मु मास्टर भीतर को पढेली देखो एटी मास्टर को पढेली एबे मु ट्राई करबी डिलीट करिया पे ये सक्सेसफुली डिलीट हो जिवो ओके आउ रहिबनी देखो एटी तुम जे देखिया पे चाहछो एटी के आसलो ओके रिफ्रेश कर देलो रिफ्रेश करके डेटाबेस भीतर जाओ यू विल नॉट फाइंड बैंक एनीमोर you will not find bank here. Clear? So drop command is used. Okay, drop command is used to remove database permanently. So जो database हमें discuss करते ले ए पर्यंत structure टा से structure टा खाली हमें create करचे use करचे delete करचे. So clear everyone or any questions? Yes, sir. Okay. So now database is created, right? So database हमारा successfully create हो गया. So database भीतर हमें कौन तैयार करिया? Database भीतर कौन तैयार करिया? Data store करिया पेंकी. Why there is silence? Inside table, right? That table. टेबुलर फॉर्मेट रे हमें डाटा को स्टोर करके रखियो. Okay, we'll have to create tables. Okay, in database we can create multiple tables. Okay, to store the data. Okay, आज मु बेसिक कहि बने अल्प जस्ट टिक टेबल रो इंट्रोडक्शन देबी. सपोज मु गोटे टेबल एमती बनाया को चाहूचे. Okay, so I want to create a table like this. एमती डेटाबेस भीतर एमती गोटे टेबल क्रिएट करयार अछि जहार नाम देबे एम्प्लॉय. ओके, सो टेल मी गाइस आर डेटा टाइप टा कोन को टाइप रो डेटा स्टोर करछि? मतलब न्यूमेरिक एंड जो टेक्स्ट डाटा से Numeric. This चला टेक्स्ट this is text data और आपको मान को string data. So इटा कोन text by string. Correct? यस. Okay. So now let's create a simple table जो तीनटा कॉलम थिबो आउ चारिटा रो थिबो. It has 3 columns. Column header है employee code, employee name, employee address.
now it has 4 columns माने sorry 4 rows माने 4टा record ଅଛି okay so सर now स्ट्रिंग माने कौन? hello सर स्ट्रिंग माने कौन? string होची suppose let's say n लिखिली n computer system गोटे character बोली कुए right n गोटे character single character कोनती जानछ कि नहीं आगे okay so a string or text is a collection of characters मोदे नरेश लिखिली it is a collection of characters okay ओके सर Dinesh लिखिली it's a collection of character plot number 1 to लिखिली this is also a string okay so this is यस सर ताको string कोहंती बा text कोहंती आ एटा तो नंबर जानिचो गोटे डेसिमल नंबर अछि गोटे होल नंबर एटा होल नंबर दशमिक संख्या तुम जानिचो ओके देन डेट रहउची टाइम रहउची डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो डेटा टाइप रहउची ओके सो एबे हम बेसिक दिस वन वी विल ट्राई टू क्रिएट ओके सो टेबल रो ना हला एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एड्रेस ओके सो टेबल क्रिएट करिया पे कमांड होची क्रिएट टेबल ओके सो टेबल रो ना हला एम्प्लॉय ओके तो अगेन मो डेटाबेस एठी नाही सो मो आउथरे क्रिएट कर दोची बैंक को क्रिएट हे गला यूज हे गला ना बैंक भीतर मो अछि आई वांट टू क्रिएट अ टेबल ओके टेबल भीतर फर्स्ट रहला को कॉलम मोर अछि एम्प्लॉय कोड राइट यस और नो yes ओके एम्प्लॉय कोड को टाइप रो डेटा एक्सेप्ट करबो न्यूमेरिक डेटा राइट यस और नो सो न्यूमेरिक डेटा को एठी जो एसक्यूएल रो जो डेटा टाइप से न्यूमेरिक डेटा को होल्ड करियो ताकू कोनती इंटीजर ओके इंटीजर माने आईएनटी लिखा जाए आईएनटी माने होची एम्प्लॉय कोड विल होल्ड होल नंबर्स एठी एसक्यूएल रे ताकू आईएनटी कुआ जाए इंटीजर ओके एम्प्लॉय एटा टेक्स्ट बा स्ट्रिंग टाइप रो डेटा होल्ड करबो एठी कुआ जाए var char कोन होची टेक्स्ट और स्ट्रिंग टाइप रो डेटा होल्ड करिवो आउ से जो मु लिखले एटी साइज देली 50 त माने 50 टा कैरेक्टर तमे देई परिबो तमे लेट्स से मु लिखबी नरेश सो नरेश रो लेंथ होची 1 2 3 4 5 6 नरेश रो नेम लेंथ 6 कैरेक्टर्स बट अप टू 50 कैरेक्टर्स पर्यंत मु डेटा स्टोर कर परिबी तापर रहला एम्प्लॉय एड्रेस ओके एम्प्लॉय ऐड मु लिख देले एका कथा एट देबी var char of let's say 50 bracket close so now so this is my table create okay create table ro na hala employee okay so employee table ro tinita column अछि employee code employee name employee address employee code को टाइप रो डेटा को होल्ड करिवो मोर एटा को से डेटा टाइप टा मेंशन करिया अछि employee code न्यूमेरिक डेटा को होल्ड करिवो एसक्यूएल रे न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करिया पे गोटे डेटा टाइप अछि इंटीजर ता माने जदी तुम इंटीजर देलो एठी तुम न्यूमेरिक डेटा स्टोर करि परिबो टेक्स्ट डेटा स्टोर करि परिबोनी बा एम्प्लॉय कोड रे कहा ना तुम स्टोर करिया चाहने से अलाउ करिबोनी ओके एम्प्लॉय नेम रे var char देली माने एठी मु स्ट्रिंग बा टेक्स्ट टाइप रो डेटा स्टोर करबी बट जहार जो टेक्स्ट रो लेंथ मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हेतिबो ताठरो अधिक हेले ये अलाउ करिबोनी एम्प्लॉय एड्रेस रे देखो सेमती 50 टा कैरेक्टर रो डेटा मु स्टोर करि परिबी ओके सो देखो एटा मु आउ ए टेबल टा तमे एमती जदी रन करिवो एटी सिलेक्ट कलो एग्जीक्यूट कलो ओके तुमको एरर आसीबो ये गोटे एटा होची कंप्लीटली गोटे सिंगल कमांड ए सिंगल कमांड माने यू विल हैव टू सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट ओके यू विल हैव टू सिलेक्ट कंप्लीट क्रिएट रो सिलेक्ट करिवो एग्जीक्यूट करिवो त माने देखो आउ थरे मैं एक्सप्लेन करूची ओके सो क्रिएट कमांड यूज होची टेबल को क्रिएट करिया पे एटा होची ए जो नाटा दला एटा होची टेबल नेम एटा को भी ना तब नेम एम्प्लॉय दियो स्टूडेंट दियो कस्टमर दियो बैंक ट्रांजैक्शन दियो जहां तमे दबा कथा ये दिस नेम विल बी गिवन बाय यूजर हम बोला यूजर बा डेवलपर ए नेम टा क्रिएट दबा ओके क्रिएट टेबल कंपलसरी लिखिया पड़ियो देन यू हैव टू राइट द टेबल नेम तापर स्टार्ट गोटे ब्रैकेट एंड गोटे ब्रैकेट क्रिएट टेबल स्टार्ट ला एंड ता भीतर मु तीनटा कॉलम रखिबी तीनटा कॉलम रो नाम मेंशन कली तापर तीनटा कॉलम को टाइप रो डेटा को स्टोर करि परिबे सेटा मु मेंशन इंटीजर माने इट विल होल्ड ओनली होल नंबर्स
एठी जदि मु 23.5 स्टोर करिया चाहिए एटा पॉसिबल नो एठी जदि मु स्टोर करिया चाहिए लेट्स से प्रज्ञा इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मु ऑलरेडी स्पेसिफाई करछि एम्प्लॉय कोड रे न्यूमेरिक डेटा रहइबो दैट टू होल नंबर्स रहइबो एम्प्लॉय नेम रे var char माने var char होल्ड करिवो टेक्स्ट आउ स्ट्रिंग टाइप रो डेटा को एंड दैट टू अप टू लेंथ हेतिवा दरकार 50 कैरेक्टर्स ओके एम्प्लॉय एड्रेस var of 50 सेम टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग को स्टोर करिवो अप टू 50 कैरेक्टर्स पर्यंत स्टोर करि परियो सो एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव टेबल क्रिएशन स्ट्रक्चर रे कहार किछ क्वेश्चन अछि सर जो वेयर का जो 50 सेटा माने कोन तार 50 न रखी जो जने 40 रखिला तो सेतरे किछ हाँ किसी प्रॉब्लम प्रकार नहीं है 40 टा कैरेक्टर स्टोर करि परियो 50 हेले 50 टा कैरेक्टर स्टोर करि परियो दैट इज द डिफरेंस आउ किछ नै तमे 100 अब लिखला जो स्ट्रिंग रे जहां भी हमें किछ लिखु छु तार जो कोड देखो टा ये सेटा var से char var देखो कार ही var char माने या भितरे मु लेट्स से विजय लक्ष्मी स्टोर करि परिबी ओके या भितरे मु एबीसी 123 स्टोर करि परिबी या भितरे मु प्लॉट नंबर स्टोर करि परिबी या भितरे मु फोन नंबर स्टोर करि परिबी जहां चाहिए स्टोर करि परिबी कारण एटा होची स्ट्रिंग टाइप रो डेटा को होल्ड करिवो आ स्ट्रिंग टाइप रो डेटा मु ऑलरेडी कहछि खाली अल्फाबेट भी हेई परिबो अल्फा न्यूमेरिक भी हेई परिबो न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर हेई परिबो जहां तमे एंटर कर दबो से स्टोर करिवो किछि असुविधा नै क्लियर बट एथ रे खाली न्यूमेरिक डेटा दैट टू होल नंबर आ सर छडा नेम रे तो कहार माने न्यूमेरिक न थाए तो सेटा खाली से यदि कैर लिखि करबो असुविधा हो नेम रे तो कहार न्यूमेरिक न थाए केवल माने अल्फाबेट थाए नहीं ये तो देखो से मेरा नेम नेम हो ओके नेम टा को हमें कहूचे गोटे स्ट्रिंग बा टेक्स्ट ओके स्ट्रिंग टेक्स्ट आउ var char हो char भी गोटे डेटा टाइप अछि हम परे डिस्कस करिया var char हो char हो आ भितरे सब तमे स्टोर करि परिबो तमे खाली ओके गेटिंग लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज ओके सो तमे देखो एटी var char लेखो हमें पर डिस्कस करिया एबे डोंट डिस्कस लेट्स नॉट डिस्कस char सो var char रे हमें किछि जनकर सिंपल नेम भी लिखि परिबा सिंगल कोड भीतर किछि भी हमें बेसिकली हमें अल्फाबेट न्यूमेरिक लिखि परिबा हमें अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर लिखि परिबा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर हमर जो टाइप रो डेटा आसीबो हमें सेटा को या थ्रू रे कैप्चर कर दे परिबा बट तमे जदि कहउचो वैलिडेट करिया दरकार नेम रे नेम आसिया दरकार स्पेशल कैरेक्टर आसिया दरकार ने सेटा में परे पड़िया आम सेटा गोटे कन्स्ट्रेंट करी गोटे टॉपिक अछि कन्स्ट्रेंट रे रेस्ट्रिक्शंस पड़िया लेट्स से मोर जेंडर रे मेल और फीमेल रखिबे हले राइट जेंडर भितर मु आइदर मेल रखिबे नले फीमेल रखिबे जदि जेंडर भितर 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जी रखले एटा भूल राइट एटा रॉन्ग यस और नो करेक्ट जेंडर भितर इधर मेल और फीमेल रहबो नले एम नले एफ रहबो बट आई कैन नॉट राइट 1 2 आज्ञा 3 सर हेलो हाय एमती किछि भी रखि परिबिनी ए जो रेस्ट्रिक्शन टा ना एबे रेस्ट्रिक्शन नाही एबे तुम किछि भी रखि परिबो बट आगु गोटे टॉपिक अछि कंस्ट्रेंट जोठी हमें पढिया केमिति डाटा गुडा को रेस्ट्रिक्ट हमें करि परिया एबे तुम किछि भी रैंडम वैल्यू रखि परिबो एम्प्लॉय नेम रे एबी किछि भी लिखो 1 2 3 एबीसी एनी रैंडम वैल्यू यू कैन एंटर किछि भी मन इच्छा लिखि परिबो बट से रेस्ट्रिक्शन टा हमें पर देखे एबे तुम जस्ट अंडरस्टैंड टेबल केमिति क्रिएट होउची डाटा केमिति इंसर्ट होउची ओके सो एवरीवन अंडरस्टूड ए टेबल क्रिएट हो जाय ऑलरेडी सर आपण जो प्रीवियसली जो टेबल टा आपण एक्सेल शीट रे कले ताकू एनालिसिस करिकि एठी हमको लेखिबा को पड़िबो ना टेबल यस देखो एज ए डाटा एनालिस्ट हमको टेबल क्रिएट करिया नहीं ओके हाँ आमे जो प्रोजेक्ट रे काम करिया ऑलरेडी से टेबल थिबो डेटा थिबो सब सफिशिएंट थिबो हम काम होची डेटा को एनालाइज करिया ओके बट जेहेतु हम गोटे टूल्स सिखुचे वी शुड नो दिस ओके हमर काम रे किंतु 99% ही यूज आसीबो ने मतलब काम करिया बट स्किल हम सिखुचे हम सिखिया को पड़िबो राइट आमे कोन मैथमेटिक्स रे जदी हम माने टोटल 12 जा पढुचे हम कोन लाइफ रे सब बळे कि भी जदी साइंटिस्ट हो कोन सब से यूज करथिबो कि बट एज ए स्ट्रक्चर हमको सब शिक्षार अच्छे टेबल टा केमिति इंसर्ट क्रिएट होउथिबो डेटा केमिति इंसर्ट होउची डेटा केमिति फ्लो होउची डेटा केमिति आसुची गोटे जगह रे स्टोर होउची वी शुड बी नोइंग एवरीथिंग बट
এই जोटा तुमको स्ट्रक्चर देखिले सो दैट तमे इजीली बुझी परिबो जे जो स्ट्रक्चर टा में एक्सेल रे क्रिएट करले से स्ट्रक्चर टा में एग्जैक्टली क्रिएट करिया को चाहूचे इन एसक्यूएल राइट ओके क्लियर सर एई सब माने एई सब कमेंट्स लिखिला परे टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हे जिवो टेबल क्रिएट हो डेटा कथा हमें डिस्कस करले एगुडा कहि गला डेटा बुझ परछो हम्म डेटा कथा हमें डिस्कस करले हमें खाली स्ट्रक्चर क्रिएट करछे हमें खाली माने मोदी कहबे हमें खाली स्ट्रक्चर क्रिएट करछे ओके हमें स्ट्रक्चर हमें एटा क्रिएट करिया को ट्राई करछे ठीक अछि अच्छा ओके डेटा कथा हमें अभी डिस्कस करने डेटा तो हमें इंसर्टिंग करने हैं ओके ओके सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड एस कंप्लीट लाइन टाको सिलेक्ट करिया को पड़िबो एग्जीक्यूट करिया को पड़िबो ओके और देयर इज ऑलरेडी अ टेबल ऑब्जेक्ट नेम्ड एम्प्लॉय इन डेटाबेस देखो कोठी क्रिएट हेची तुम जदि एटी देखिबो डेटाबेस भितरे को डेटाबेस भितरे क्रिएट हेची है टेबल टा को डेटाबेस भितरे क्रिएट बैंक हेची बैंक यस बैंक ओके सो बैंक भितर को जिबा बैंक बैंक भितर देखो टेबल tables ଲେଖା ହେଇଛି tables ଭିତରେ you all can see this employee table okay so employee table ରେ ଦେଖ columns ଦେଖ columns ଭିତରେ ତିନିଟା column ଅଛି हम्म employee code employee name employee address correct so that means this table is created how to check କୋଉ database ଭିତରେ create ହେଇଛି bank ଭିତରେ create ହେଇଛି now inside bank there is a tables folder okay so tables folder ଭିତରେ you can see this okay okay now table is created successfully ए टेबल क्रिएट हैला बोली कि तमे गोटे देखिलो ओके टेबल क्रिएट हैला बोली कि तमे एटी चेक कलो डेटाबेस भीतर चेक कलो बट आउ केमती चेक करा जाय परिबो हमें गोटे कमांड लिखिया सिलेक्ट बहुत माइंडफुली देखो ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYEE ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय माने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखले एको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कले एटी तुमको क्लियरली से टेबल रो स्ट्रक्चर टा देखै देला त माने दिस टेबल इज क्रिएटेड एम्प्लॉय टेबल तो इज क्रिएटेड स्टार विथ फॉर्म कौन पे लिखा है स्टार मींस शो मी ऑल द कॉलम्स ओके स्टार स्टार रिप्रेजेंट करछि शो मी ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल मु जदी स्टार लिखिबिनी ताहले एरर थ्रो करिवो फर्स्ट किसी देखेबोनी एरर थ्रो करिवो स्टार लिखले मते तीनटा कॉलम को देखै दबो ओके मु जदी सर चाहेबी जब स्टार करके रहला तो ये सब छोट छोट जिनस नोट्स हमू मिल जाए ना एड़ा सब मन रखा ପାଇଁ डिफिकल्ट हो नुआ ना तो या एटा तो डेली एटा डेली करिवो ओके एटा तो अच्छा लिखि अच्छा दो ठीक है एटा एटा डेली तुम करिवो एगुडा के क्वेश्चन इंटरव्यू रे पचारिबेनी तमे जो स्टार्ट आज्ञा को नै जो इंट्रोडक्शन पार्ट एगुडा केही पचारिबेनी सबरो नोट्स मिलिबो सबरो नोट्स अवेलेबल अछि किछि प्रॉब्लम नै ओके डोंट वरी सर आ रनिंग नोट्स हम लिखि चले कोड संगे जेमति हम लिखि चलछि विल हैव टू राइट सिलेक्ट select star select star command is used to retrieve data from table. So table रो जदि data retrieve करके देखिया थिबो select star command बा data fetch करके देखिया थिबो सो हमको select star command यूज करा जाय बेसिकली एटी किछि नाही डेटा तो सेति पय तमे किछि देखि परनो ओके किछि न हमें डेटा किछि इंसर्ट करने खाली टेबल क्रिएट करछे राइट we have just created the table we have not inserted any data so data insert करिया पय की कमांड होछि very simple देखो insert into table name okay values देखो insert into table रो ना तापर values मु कोन दबाउ चाहूची सपोज मैं एम्प्लॉय कोड दबाउ चाहूची मोर कोन थिला एक्सेल शीट करेक्ट ए थिला मोर फर्स्ट रिकॉर्ड करेक्ट यस और नो ओके यस सर यस एठी एठी एमती दबाउ पड़िबो गोटे गोटे डेटा पास कलो कमा देलो ओके ए डेटाटा का पे गला एम्प्लॉय कोड पे कि विजय लक्ष्मी पे कि सिंगल कोड भितरे तुमको टेक्स्ट वैल्यू सब बेले सिंगल कोड रे एनक्लोज हबो कोनोसी को प्रोग्रामिंग रे डबल कोट्स रुहे एटा सिंगल इन्वर्टेड कमा रे सब बेले रहबो तेटी मोटे नोट लिखि दउची नोट द नोट इज you must enclose
or cover I can say easy रखे हुए you must enclose text date values in single quotes. Okay, you must enclose text date values in single quotes. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ text date value ଲେଖେ न्यूमेरिक ପାଇଁ single quote ରେ cover କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ but text value ଆଉ date value ପାଇଁ କି single date value ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା କେମିତି discuss କରିବା. Okay, insert into employee values 100 देखो ये 100 टा ଯିବ କୋଉ column ରେ जो sequence रे okay जो sequence रे table create ହେଇଛି will have to pass the value in the same sequence. Insert into employee values 100 Vijayalakshmi PBSR. This is my first one. Okay, so देखो एटा को सिलेक्ट करिवि ए लाइन टा को सिलेक्ट करिवि एग्जीक्यूट करिवि one row affected माने गोटे रो इंसर्ट हैला. ओके, one row affected माने गोटे रो इंसर्ट हैला. एटा को सिलेक्ट करली एग्जीक्यूट करली गोटे रो इंसर्ट हैला. if I just try to execute this command, can you see one record is inserted? बुझ परछो फर्स्ट record insert हैला. Copy paste control C. Yes. So now Dinesh को single quote रे enclose करिबी, CT को भी single quote रे enclose करिबी because এটা হচ্ছে text value, right? So text value must be enclosed within single quotes. Clear? So a line टा मैं execute करिथिली आउ ये तीनटा लाइन को सिलेक्ट करले एग्जीक्यूट कर देबी. ओके, एबे देखो आंसर कोन आसला तीन थर रो अफेक्टेड आसला तमे तीनटा रो इंसर्ट हे गेला. अगर गोटे हेतला एबे तीनटा हला चारटा रो इंसर्ट हे. क्लियर? insert into employee values this एटा मु पास करूची कोड ପାଇଁ कि एटा ला text I mean name, this is for the address and always you should enclose name और date को सब वाले single quote रे enclose करा जाए. In some of the programming languages it is in double quotes. किछि किछि जगह रे single quote किछि किछि जगह रे double quotes बट double inverted comma रे enclose करिया को पड़ियो. Okay, so first हम table database create करले, then we have created we used that database. तापर हमें database को table create करले with 3 columns and we have inserted 4 records. चारिटा record insert करले. Okay, each row रे तीनटा column रो value pass करूचे. एटा code ପାଇଁ कि एटा name ପାଇଁ कि एटा address ପାଇଁ कि. This is how it is going to work. हम select करले execute करले. Okay, clear or any questions? सर क्रिएट टेबल पर Mm-hmm. मोरो तापरे होनी माने इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर एमती आछि. माने आपण जेमती एम्प्लॉय नेम रे ओपन करथिले मु स्कूल नेम रे ओपन करथिले. कोड ए क्रिएट टेबल टा होनी नहीं हाँ जेमती एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एड्रेस या पर स्टेप टू मोर होनी ना ना एटा क्रिएट हेछि. हाँ क्रिएट टेबल हेछि. तमे देखि पड़छो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार के देखु जो टेबल आछी ए साइड रे आपण को जेमती डेटाबेस स्नैपशॉट्स नहीं कि सेठी आछी.
आसुची तो हाँ एटा होनी एटा देखो तो एग्जैक्टली ठीक लिखिछ तमे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠେଇବି କି? यस यस सो बेटर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो माने प्रैक्टिस करछो लैपटॉप रु कनेक्ट करले बेटर ओके सो दैट तुम इमीडिएटली लैपटॉप शेयर करि परियो तुम स्क्रीन शेयर करि परियो ओके सर जो ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ହେଇ ସାରିଛି ଯୋଉ ଆମେ इंसर्ट ଲେଫ୍ଟ इनटू देखो जो टेबल टा क्रिएट कला इंसर्ट इनटू से टेबल रो ना वैल्यूज ओके से टेबल रे जेतेटा कॉलम अछि एग्जैक्टली सेतेटा कॉलम रो वैल्यू पास करियर अछि फर्स्ट कॉलम परे गोटे कॉमा सेकंड कॉलम परे कॉमा थर्ड कॉलम रे कॉमा किछि नै कारण सेठी क्लोज होछि एठी भी जेमती टेबल क्रिएट बेलको जेमती हम गोटे नंबर लिखु हम केमती नंबर ब्रैकेट रे लिखिया 10 20 कॉमा 30 देले क्लोज कर देले आ परे ओठी कॉमा लिखला मन से एरर दबो एमती ला से ये सेमती तीनटा कॉलम हला दीटा पई कि कमे कॉमा देले लास्ट पई कि कॉमा दरकार नै ओके एठी सेति पई कि एक्चुअली बहुत जगह रे एमती पढांती ओके एमिति पढांती मु जानि सुनि तुमको एते बड़ जूम करके देखौची बिकॉज तुम क्लियरली अंडरस्टैंड करो कि देखो एठी फास्ट वैल्यू पास करछे गोटे कॉमा दोछे तापर एटा जेतु गोटे टेक्स्ट वैल्यू एटा सिंगल कोट रहला एटा सिंगल कोट रहला सेटा को पूरा माने फॉलो करो तमें 100% छोट गोटे कोटी सिंटैक्स मिस्टेक हेती हाँ तुम स्क्रीनशॉट पठाओ हम संग संग देखि दो सर पठेइली ଆପଣଙ୍କୁ। ओके लेट मी क्विकली चेक दिस अब के ट्राई करछो होची कि नहीं सर एक्चुअली ये मतलब होची कि सर एथरे से डाटा जो टेबल और डाटाबेस सेम नेम रे अछि सेति में हम टेबल आउट डेटाबेस जेटा सेम नेम सर माने जो देइछंती आई थिंक सेमिति किछि प्रॉब्लम होबा कथा नहीं से डाटाबेस नेम और टेबल नेम को सेम हे परिबो हाँ चलेगा नहीं परियो चलियो आओ। देखो varchar परे गोटे स्पेस देइछो मु कोन स्पेस देइछि varchar परे तुम varchar परे स्पेस देइछो करेक्ट सर स्पेस रिड्यूस कला ପରେ ବି तो ଇଏ कमा देइछो कि कमा देइछो କୋଉଠି ନା ନା କମା ଦେଇନି। ए तुम कहूछि कमा तुम देइनो ओके एटी सरला पर सेम कमा दिए सेम एटी गोटे सेम स्पेस थिंग देइछो एटी गोटे आସୁଛି स्पेस देइछो सर सेम थिंग्स आସୁଛି। नहीं तुम्हें पुणी किसी ना किसी मिस्टेक करछ 100% श्योर ओके स्क्रीनशॉट फटाफट पठाओ देखिए हाँ तुम ଏବେ ଆସିଲା database school already exist choose a different database name। हाँ डेटाबेस ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲ କୋଡ ଟା ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି ମାନେ देखिए database अभी ନେଇ। ट्राई हाँ करिया टू चेक नहीं एटी मोर हे गला बैंक डेटाबेस अछि बैंक टेबल तमे तो ए तमे तमे एतिकी रन करछो तमे पूरा रन कर दोछो बोधे एतिकी रन करो टेबल टा को रन करो नॉट द एंटायर कमांड मु टेबल टा करछि एतिकी पार्ट रन करबी तमे सब सिलेक्ट करनी हला मु डेटाबेस जा ना थिला टेबल रो सेम नेम मु कली राइट सो तमे आई थिंक तमे कंप्लीट ये करछो सब सिलेक्ट करनी जेतिकी एतिकी ही सिलेक्ट करो ट्राई करो नहले गोटे काम करि परिबो तमे लेट्स से तमे जदी बाय चांस लैपटॉप रु कनेक्ट हेइन ओके तमे लैपटॉप रे व्हाट्सएप को खोल देबो ओके जहा कमांड थिबो सेटा को संगे संगे सेठू व्हाट्सएप रु ओके व्हाट्सएप रे ग्रुप रे शेयर कर देबो कि पिंग कर देबो
ହେଲା ଏଇଟାକୁ କପି କରିକି WhatsApp ରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ପଢେଇଛି सर ସେଇ ମାନେ ସେଇ ବ୍ରାକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ବ୍ରାକେଟ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ତାପରେ କର ହଁ ଏକ୍ସିକ୍यूट करला ପରେ ବି ସେମ୍ ଆସୁଛି इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर स्कूल कोड ଲେଖ ପଠାଅ ତ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠାଅ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ତମେ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁନ କ୍ରିଏଟ ଟେବୁଲ ସ୍କୁଲ ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଦେଖିଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ରେ ସେ ବ୍ରାକେଟ ରୁ ଏ ବ୍ରାକେଟ କ୍ରିଏଟ କି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କ୍ରିଏଟ ଟେବୁଲ ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ दैट कमांड राइट क्रिएट टेबल माने कमांड टा सी रू स्टार्ट होउची क्रिएट रू स्टार्ट होउची टिल द लास्ट ब्रैकेट सो यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट मच फ्रॉम स्टार्टिंग रू सी रू नहीं कि लास्ट ब्रैकेट पर्यंत देखो एबे ट्राई करो हाँ तो आसिला देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड स्कूल इन दिस डेटाबेस क्रिएट हो जाइए कि लिखला हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल कोठी सिलेक्ट नेक्स्ट तापर पूरा लास्ट लास्ट लाइन को लिखा मैं आउरी जल्दी साथांते जब तुम लैपटॉप रो कनेक्ट ही थांते आउ के ट्राई करछो कार हैला के हैला ने सर କରୁଛି ବାକି ସାର୍ ହେଇଛି जल्दी तुमको ये होची मु संगे संग ग्रुप रे पके दोची एबे नले ओके कार किसी डाउट अछि चित्रे जहां हम कवर करले लास्ट को ଲେଖା ହବ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟी एटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल रो ना जाए तो तुम एम्प्लॉय करता स्कूल करता कस्टमर करता ओके तो सर सेम ही आसिला देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड स्कूल इन दिस डेटाबेस इट्स ऑलरेडी हाँ तुम कहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो ना हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल ही कली हाँ हाँ तो तापरे एग्जीक्यूट कली हाँ तो सेम थिंग ही आसिला देयर इज ऑलरेडी एन select ऑब्जेक्ट star from employee will show you something it will not create जे नहीं क्रिएट करिवो से कहबो क्रिएट एतिरे देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट एटा इंसर्ट को माने क्रिएट करिया टाइम रे से एरर आसीबो एटा जस्ट टेबल टा क्रिएट हेतिले शो करिवो अच्छा तो एटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाटएवर जहां तुम क्रिएट करछो स्कूल करछो एम्प्लॉय करछो क्रिएट करके एग्जीक्यूट करो देखाओ थरे ट्राई करो तमे कनेक्ट करि परिबो कि संगे संगे जूम को सेठी कनेक्ट करि परिबो हमें क्विकली वी विल सॉर्ट इट आउट टिके टाइम लागिबो सर तो मो बाय नो प्रॉब्लम मु अच्छा आज ट्राई करूची मु नले नेक्स्ट क्लास आपन को कहबे ओके ओके सो सिंपल नुआ नुआ तमे माने सर जो सर ଟିକେ हम्म सर ମୁଁ ଯୋଉ ଡେଟାଟା ଯୋଉ ଲେଖିଲି ସେଟା ତ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କଲା ପରେ ତ କାହିଁ କିଛି ଆସୁନି सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନେ ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ सिस्टम କରିବ नहीं ନା आउ ପୁରା कहा को मु कहूची नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स तमे जदी लैपटॉप रो कनेक्ट न करिवो ताले आई विल नॉट एंटरटेन आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चंस लैपटॉप रो कनेक्ट करछ विजय लक्ष्मी ना मोबाइल रे ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ लैपटॉप କନେକ୍ଟ रो କରିକି कले हम ଲାପଟପ୍ देखि पर तुम गोटे मिनिट रे एटा सॉल्व हे जिवो ओके सो तो कारण तमे कोन कहूछ तमे मते कहले मु बुझी परिबेनी मते तमे स्क्रीन शो करिया पड़ियो कोड देखिया पड़ियो तमे कोडी कमा मिस कर देथियो कोडी ए डेटाटा इंसर्ट हेइ नथियो तमे सिलेक्ट स्टार तमे प्रॉपर एटा करछो माने तमे स्क्रीनशॉट शेयर करो फटाफट जहा करछो संगे संगे स्क्रीनशॉट शेयर करो କରୁଛି
स्क्रीनशॉट थिले फटाफट देखि दियो किछ प्रॉब्लम नहीं। ଆଉ କାହାର କିଛି सोमनाथ କାହାର କିଛି क्वेश्चन ଅଛି सर डाउट? କରିଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ବାକି କରିଛି। हाँ देख तुम सेटा इंसर्ट देख तुम देख लो एम्प्लॉई तुम इंसर्ट करनो सेटा को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करिया पड़िबा तापर फास्ट इंसर्ट स्टेटमेंट रे एम्प्लॉई टा भूल अछि लिखिछो स्पेलिंग देखो ईएमपी रे डबल एल लिखिछो अच्छा अच्छा सेटा डबल आग सिंगल एल करो तापर चारिटा को सिलेक्ट करके चारिटा इंसर्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो स्टेप बाय स्टेप करो प्रथमे सेटा को फिक्स करो हाँ सेटा କରିଲି ତାପରେ ଏକାଥରେ तापर ଚାରିଟା ଜାଗାକୁ ସାର୍ हाँ କଣ ସିଲେକ୍ଟ चारटा କରିବି ତ? चारटा जाक सिलेक्ट करो चारटा जाक प्रथम आई रु हाँ नेकरी बीबीएसआर रो लास्ट लास्ट ब्रैकेट कर दो बीबीएसआर दे लास्ट चारिटा लाइन सिलेक्ट को करिया दरकार नहीं से चारिटा इंसर्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो सर लिखला कि वन रो अफेक्टेड एमती चार ଲେଖିକି थर आस्थिबो राइट एबे आज्ञा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कलो एबे खाली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो हाँ ଆସିଲା ଏବେ आसिला तो आज्ञा क्लियर हाँ यस ओके डन हेला प्रज्ञा हेला सर मु आउथरे स्टार्टिंग रू चेंज करके ଟିକେ କରୁଛି ମାନେ हाँ ସ୍କୁଲ ତାପରେ नेम्स वगैरह सब स्टूडेंट्स एमती टाइप जो कमांड्स गुडा दउची से कमांड्स गुडा ग्रुप रे देइची पूरा ताकू देखो कमा ये सब फॉलो करो पूरा ओके टिके कोडी कमा सेमीकोलन कमा सिंगल कोट मिसिंग थिले प्रॉब्लम हो आ जदी सेटा न करचो ताहले आज फर्स्ट डे कॉपी पेस्ट करी एटलीस्ट चेक करो काली लेखिबो ला प्रथमे कॉपी पेस्ट करी बुझो ओके तापरे लेखिबो एटा बहुत इजी माने कोन कहलो ए जो इंसर्ट स्टेटमेंट गुडा को एबे तमे मासे दि मासे काम करिबो एटा भूली जिवो ओके सो जे माने बेसिकली ए कमांड गुडा को खाली कांसेप्ट जानिया दरकार कि मु केमती लिखिबे कि इंसर्ट इनटू टेबल रो ना आ वैल्यूज एक एई वैल्यूटा जीवो एठी की एई वैल्यूटा जीवो एठी की एटा जीवो एठी आउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग जेतिकिटा कॉलम सेतिकिटा वैल्यू पास करिवे आउ जो टेक्स्ट वैल्यू डेट वैल्यू को सिंगल कोट रखिबे न्यूमेरिक वैल्यू को एमती रखिबे एटा चारिटा रिकॉर्ड को इंसर्ट करिया पई कि वी आर राइटिंग फोर सेपरेट इंसर्ट स्टेटमेंट्स आमे देखिबा काली अलगा इन अ डिफरेंट वे आमे देखिया कि केमती आमे इंसर्ट करि परिया ओके यस सर सर बाकी एबे आपण बैंक रे कले सपोज मु आउ किछि नै कि परे ट्राई करिवि तो किछि भी तमे एनी ये कर परिबे तमे ठीक अछि बाकी सेटा अलगा डेटाबेस क्रिएट करी कि मते डेटाबेस करिया पे डेटाबेस गोटे भितर करो डेटाबेस मल्टीपल क्रिएट करे दरकार नहीं से जो डेटाबेस स्कूल करिचो बा बैंक बैंक भितर ସେଇଟା କୁ हाँ ତମେ ଯେତେ ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ କରିପାରିବ ଏବେ ସେଇଟା କରିବାର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଟେବୁଲ ତମେ ଯେତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଇନସର୍ଟ ଯେତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ କଲମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲେଟ୍ସ ସେ ସାଲାରୀରେ ଡେସିମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିପାରିବ ରାଇଟ୍ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରିବ ନମ୍ବରରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ ଫର ସାଲାରୀ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଫର ସାଲାରୀ କଲମ you can use money data type এই জায়গায় না ইন্টিজর জায়গায় মনি লিখিব তার মানে দশমিক সংখ্যাକୁ ଏ ନମ୍ବରଟା ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବ ମନି ଖାଲି ଏତିକି ଓକେ ସୋ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ फॉर सम रीजन जो मानकर इंस्टॉलेशन रे प्रॉब्लम अछि डू लेट अस नो नहले इंस्टॉलेशन रे प्रॉब्लम थिले पेन एंड पेपर रे लिखियो असाइनमेंट पेन एंड पेपर यूज कर लिख आमे जेतले पढुतुल आम पाखे लैपटॉप और सिस्टम नथिला क्लासरूम रे पढी आसे नोटबुक और पेन रे लिखुतुल कमांड गुडा हला तम पाखे यदि इंस्टॉल हेइनी देयर इज नो इशू ओके हां आ गुटे कथा होची मल्टीपल थिंग्स आई असाइनमेंट where is it
Okay. So can you all see my screen? ଦେଖିପାରୁଛ screen guys? Yes, sir. Okay. So assignment ଦିଟା assignment କେତେଟା ଚାରିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା assignment ଅଛି simple. देखो फर्स्ट होची माई स्कूल करी गोटे डेटाबेस क्रिएट करिवो माई स्कूल भितरे गोटे टीचर्स करी गोटे टेबल क्रिएट करिवो आउ टीचर्स रे ए सब रहइबो राइट टीचर रे टीचर आईडी रहइबो टीचर नेम रहइबो टीचर सब्जेक्ट रहइबो टीचर क्वालिफिकेशन रहइबो गाइस वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर मु तो टीसीएच आईडी लिखिची don't use space tch underscore id tch underscore id tch underscore subject name okay so चारिटा कॉलम रहइबो तांकर रेस्पेक्टिव डेटा ओके तापर गोटे लाइब्रेरी करी गोटे टेबल हबो ओके लाइब्रेरी टेबल रे यू विल हैव 4 कॉलम्स ता भितरे एम्प्टी डेटा रहइबो बुक आईडी रे सब रहइबो माने बुक नेम रे रहइबो बुक टाइप रे रहइबो नोवेल कंप्यूटर्स मैथ्स कंप्यूटर बुक प्राइस रे रहइबो आ बुक प्राइस रो डेटा टाइप तमे मनी नबो ओके सो आर डेटा टाइप कोन हो कहलो गाइस डेटा टाइप कौन हम आर को टाइप रो माने एसक्यूएल रे हम कौन लिखिया टीसीएच आईडी साइड रे var char एक्सीलेंट हमें एटा को न्यूमेरिक कंसीडर करिया ने बिकॉज़ इट्स ए अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करिया पे डेटा टाइप होची var char ओके तमे यदि आईएनटी नेलो ए वैल्यू को स्टोर करि परिबोने आईएनटी माने होची होल नंबर एटा मिक्स अछि अल्फाबेट अछि न्यूमेरिक अछि जेमती आमरी हॉस्पिटल रे तमे फ्लिपकार्ट रो किछ ऑर्डर करछो ओडी सम नंबर अछि आमरी हॉस्पिटल थिला बेले तार आईडी होची एएम 56 दिस ओके अपोलो रो मे बी एपीएल दिस ओके सो सेति पई कि एमाने को कुहा जाय आईडी बट एमाने अल्फा न्यूमेरिक डिपेंड करे बिजनेस टू बिजनेस को बिजनेस तार केमती आईडी मेंटेन करिया चाहछि मन कर हमें रोल नंबर रखिया मन कर टैलेंटेड रहइबो talented student 001 so it's a alphanumeric value it is not a numeric तो सेति पई के so this is alphanumeric माने r var char so var char data type रहबो r रहबो integer var char money रहबो एटा ओके मैं शेयर कर दोची फास्ट काम होची जहां हमें क्लास रे प्रैक्टिस करले सेई ए गुडा को फास्ट हमें करिया ओके फास्ट हमें ए गुडा को प्रैक्टिस करिया एटा प्रैक्टिस सरला परे कॉन्फिडेंटली टेबल सब क्रिएट हे गला परे तापर वी विल जंप टू द असाइनमेंट रे जहा अछि स्टेप बाय स्टेप वी विल ट्राई टू कंप्लीट असाइनमेंट करे कि यू कैन शेयर इट इन द ग्रुप ओके सर टिके रिक्वेस्ट थिले कि टिके लैंग्वेज ता पढ़े देबे कि आउतरे पढ़ाई लैंग्वेज टिके और जो डीडीएल डीएमएल सब कवर करिया डीडीएल रे मु काली गोटे बेसिक्स देबी नेक्स्ट सेशन रे ओके सेडा बेसिक देबी को कहा भीतर कोन आसुची हाँ ओके जी हाँ ठीक 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 सर ए जो आमे जो डाटाबेस टा जो माने क्रिएट करलु सेटा तार सेमति सेव हे कि रहइबो तो ताको आमे किछि सेव हाँ ना डेटाबेस टा साइड रे इट इज माने परमानेंटली सेव हैला बट ए कमांड गुडा तमे नोटपैड रे रखि परिबो नहले एटा को जदी ए फाइल टा को सेव करिवो ए फाइल रो ना रहइबो जहां तमे नाम दियो .sql रहइबो एटा गोटे फोल्डर मेंटेन करिवो सी कंप्यूटर रो सी ड्राइव किबा डी ड्राइव तमे नार गोटे फोल्डर बने देबो एसक्यूएल करी गोटे फोल्डर बने देबो एसक्यूएल भीतर सब जाके फाइल गुडा रखि परिबो नहले आको कॉपी पेस्ट करिकि गोटे नोटपैड रे लिखि नोटपैड खोलिबो नहले गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिबो कॉपी पेस्ट कलो सेटा को से फाइल टा को सेव कर रखियो डे वाइज प्रतिदिन कोन पढालो एटा मु शेयर कर देबे एनीवेज मु प्रतिदिन गोटे फाइल रे पके कि शेयर कर देबे किछ असुविधा नै आ तमे जदी एटा को तम सिस्टम रे डायरेक्टली सेव करिया चाहछो फाइल सेव करके सेव करियो फाइल सेव कला माने एटी फाइल सेव करियो ओके सेव कला को गोटे ना से आछी ओके तो से नाटा तमे गोटे किछ भी ना दे दो आज क्लास दे दो मको फर्स्ट क्लास ऑन 26th मार्च करके ना देके मेंटेन करि परिबो बट तमे डेटाबेस कमांड एग्जीक्यूट करी साइड रे जहा सब कलो दिस इज परमानेंटली स्टोर्ड एसक्यूएल सर्वर जेते बेले ओपन कले तम स्कूल में बैंक डेटाबेस थिबो तमरो ए टेबल थिबो बैंक टेबल थिबो किबा एम्प्लॉय टेबल थिबो जहा जहा में क्रिएट करछे डेटा तक थिबो सब तक थिबो क्लियर यस सर okay then that's it for today so यस okay then सर आपण जो असाइनमेंट हमको सेटा शेयर करिवे तो मु शेयर कर देबी yes I'll share that assignment यस okay then आज okay रो recording thank you all everything will be shared okay